now. So, how are you all are doing? I am coming for the second time. First time the topic was pandemic distress when we all were actually fighting with the second wave. Now, good thing is that third wave has already come and it's coming with a boom as per WHO and all. So हम सब prepared है. Actually, we all are prepared because when first wave came, we didn't know what is happening. Second wave came, and actually we knew that this can be a bigger one, and we all dealt with. Yes, we have lost many of our dear and near ones. We have lost many lives. Many people have gone at that point of time. But now, as the third wave is coming, as people are saying कि तीसरी लहर आ रही है, so much chaos is created because फर्स्ट इज जो बहुत सारे लोग मुझे ना एक्चुअली फेसबुक पे पूछ भी रहे हैं पर्सनल टेक्स्ट करके पूछ रहे हैं दो आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड आई एम नॉट अ प्रिडिक्टर आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर कि आई कैन प्रिडिक्ट कि क्या होने वाला है बट दे आर सेइंग कि थर्ड वेव इज वेरी डेंजरस फॉर किड्स yes it is dangerous for kids and it is dangerous for everybody because this is coming with a high intensity बट क्यों है कैन यू टेल मी क्यों है ये बच्चों के लिए डेंजरस बिकॉज सबसे पहली बात किड्स हैव नॉट बीन वैक्सीनेटेड ओके हमारे लिए वैक्सीनेशन है जिसमें फिर भी हम लोग जाके नहीं लगवाना चाह रहे हैं जबकि गवर्नमेंट ने फ्री किया है still we are taking our own time we are not going we are not ready to go and get vaccinated why I am here for a life why I have chosen this topic delta the new normal. Actually, this is a new normal. You believe it or not, we have to live with this. We have to. First wave गया, second wave गया. We have accepted the fact कि हमें घर पे रहना है. Mask का क्या importance है? Sanitizer क्यों जरूरी है? Why washing hands is essential? But I just want to ask all of you one important thing. आज से 17 years prior जब मेरी daughter born हुई थी, at that point of time also, before anyone could come and meet her, they were sanitizing their hands. So sanitizer तो तब भी था. So अभी कुछ नया नहीं आया है. Sanitizer is still there. It's only the use has been changed. You can say that because we all are so scared of this pandemic after losing our near and dear ones, after losing our close friends, after losing somebody we knew and we met somewhere sometime. तो उसके बाद से ना वी ऑल आर इनटू सच अ पैनिक सिचुएशन कि हमें लगता है सैनिटाइजर बचाएगा हैंड्स वॉश बचाएगा यस वो प्रोटेक्ट करेगा सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सोशल डिस्टेंसिंग another important thing is mask only that is important that can save you actually kids ज़्यादा बड़े रडार में है and only the reason is because they are not vaccinated so the best is you need to teach your kids कि बेटा आप कहीं भी बाहर जाएंगे आप अपने आप को कवर करके रखेंगे यू विल वेयर अ मास्क एंड गो ओके यू विल वॉश योर हैंड्स बिकॉज ये सब हमारे बच्चों में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है इन 2 सालों में आई नो यू ऑल विल एग्री टू दैट इट हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड तो देन आप इस चीज से क्या डरना आप थर्ड वेव से क्या डरना तो आप डेल्टा को you can actually think delta is like coming with an abundance now हम लोगों को घर का खाना आ गया जो चीजें हम अवॉइड करते थे हमने वो खानी शुरू कर दी ठीक है हमें मास्किंग की इम्पोर्टेंस पता चल गई हमें पता चल गया कि सोशल डिस्टेंसिंग हमें कितना बचाएगा जब ये सब हम लोग कवर कर चुके हैं सो डोंट यू थिंक कि दिस डेल्टा is definitely a dangerous thing definitely one should be very cautious about it because it is coming with high intensity and above all इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जैसे पहले कोरोना आपके ट्रांसमिशन जिसे कहते हैं ना ट्रांसमिशन थोड़ा सा ज्यादा होगा तो अगर ट्रांसमिशन ज्यादा है तो हमारे प्रिकॉशंस भी ज्यादा होने चाहिए राइट अभी वी आर इनटू नॉट दैट सिचुएशन वी ऑल नो दैट एंड वी नो you know that's a deep that's a deep thought that's a deep fact also abhi we all are not into that situation
कि हम लोग घर से बाहर ना निकलें, कि हम लोग अपने काम पे ना जाएं, ठीक है? We are actually not ready to have another big lockdown. We are not ready. So big lockdown हमारी वजह से ही लगता है, एंड दैट इज इन आवर हैंड्स कि हम लॉकडाउन को कैसे रोक सकते हैं। हम लॉकडाउन को रोक सकते हैं तीन चीजों से, बाय वॉशिंग आवर हैंड्स रेगुलरली, maintaining that social distancing and wearing our mask, and fourth one, which is very very important, get yourself vaccinated. If not, go today, get yourself vaccinated, and trust me and believe into this. People are telling, please go out and get yourself vaccinated, but still people are not going out. वो आपको बचाएगा. That will work like a रामबाण for you. जैसे हम लोगों ने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गिलोय पिया, हम लोगों ने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर का खाना खाया, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए योगा किया, तो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही ये वैक्सीनेशन आई हैं मार्केट में. प्लीज आप जाइए, इट्स अ रिक्वेस्ट, go and get yourself vaccinated if you really want to beat this third wave called Delta. Otherwise, there will be another lockdown. There will be another people who will be losing their jobs. There will be another set of people who will be getting depressed. There will be more cases where a relationship will be the last priority, and things like divorce and other things will be coming up. So, to avoid all that, it is better to get yourself vaccinated and treat this Delta as a new normal. And trust me, it is like a new normal. अगर आप सोचोगे, because ये सारा का सारा game, it's only about your mindset, nothing else. Pandemic distress, Delta, our kids are not safe, things are going haywire. All this can be controlled if your mindset is positive. Last time also I told you the same thing, that wave will come, wave will go. But mindset will make, you know, if we think, corona, 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 आपको corona ना चाहते हुए भी होगा. And if you stay positive and if you think, if you take precautions, if you get yourself vaccinated, then this can't do anything, trust me. तो आज मैं आपके सामने कोई ज्ञानबाजी नहीं करने आई हूँ, मैं आपको कोई ज्ञान नहीं बांटने आई हूँ, मैं सिर्फ आपको इतना समझाने आई हूँ, Delta is another new normal for us. So be prepared, be ready to welcome this Delta, be ready with your kids telling what they need to do when they are moving out. They have to wash their hands regularly, they have to wear mask every time, and then above all, because they are not vaccinated, yes, the risk is higher in kids, but you have to tell them, you have to prepare them, they have to stay positive, they have to do that social distancing. Okay, आप ये सोचो, 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, 2 साल से वो अपने पीयर ग्रुप, अपने फ्रेंड से नहीं मिले हैं, ठीक है? 2 साल से उन्होंने वो सब चीजें जो वी आर फेसिंग सिटिंग एट होम, दे आर डीलिंग विद दैट. डू यू थिंक दैट्स राइट? नो. तो कोरोना को हराना है, बट वो कैसे हराना है? वो ऐसे हराना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, वी विल गेट आवरसेल्फ वैक्सीनेटेड, we will wash our hands regularly, and above all, we will keep a positive mindset, which is very very important. So if you are with me and if you are listening me, if you will, see this video maybe on YouTube or some other media, then you should keep all these four things in mind and just stay positive, keep smiling, and trust me, this third wave will not be disastrous. This will not create any pandemic stress. This is just, what nature is telling us. This is what nature is explaining us what we need to do. Just remember that it's a new normal and we all have to deal with it. It's either we can stay positive, smile and welcome this wave, or we can again come into distress, again we can, get panic, and again
we can lose many of our real and near dear ones. Fine. Stay tuned with me for more live on more different topics that we will be coming with up very soon. Thank you for listening. Thank you for being patient. This is Preeti Kapoor, and I'm now signing off. Thank you so much.